even I could say I have to take a deep breath first. Yeah, and many echo the same sentiments right here when they see you in person. But this universe, your voice, demeanor, loved you since then, and now, when we saw in Arya in season one and season two, you have been a different character every scene. Like every scene, there are so many layers to you. Effortlessly carrying एक जो laptop को जब भी the USB is found and she's watching the video from Chandrapur Singh, her husband, and then she goes hugs the laptop and that cry without saying a word. You express a million emotions there and many others through this both the seasons. But how do you effortlessly manage to do this in season 1, 2, and now yet again in season 3? Wow, thank you for that. That is a very special moment. The holding of the laptop and missing him, Tej. Honestly, whatever it is that I do in my second innings, which has been now, जब से ये 8 साल का hiatus खत्म हुआ and I came back to filming again, all the credit goes to this fantastic team that I work with, all of it. Because if it was not for Mr. Ram Madhwani, directorial side, Amita Madhwani, production side, the entire team, Sia, Ria, the Olias, and we have the women Shakti that this team carries is impressive. My two amazing directors, other than Mr. Ram Madhwani, Kapil and Shraddha, who are here with us. They single-handedly are responsible for having me be excited every morning कि आज मुझे काम पे जाना है, क्योंकि आज मुझे कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा. And ultimately, you see, you need to have the audacity to make, like Gaurav beautifully said, a Michael Corleone in India as a female, when you have a Disney Plus Hotstar backing it. And to have that kind of vision, everything that you're asking me, honestly, the credit lies with people, this team, the platform, the RMF Films, this gang, and the most amazing cast and crew. This season, we have 2 women DOPs, which, by the way, if you see the visuals, you can see how they have got the essence and the depth of Arya. Yes, that's well around the world. So Kavya and Priyanka, huge shout out to you. And to women at large, if you like what you see in Arya, it's because I am every woman. For me, as Arya, there is every single opportunity to celebrate life, to celebrate loss, to live through pain, and to rise stronger. So that Sherni, that she's come to be known as Arya, that I believe is in every woman. So it is a huge privilege to be able to play her. To the woman power. Let's have a huge round of applause. And a big shout out to Kapil and Shraddha as well. We're looking forward to season 3 as eagerly we wait for 1 and 2 and now can't wait. It's the best season. Yeah, look, definitely, the trailer definitely justifies that. So, and now coming to, you've got a great voice, as somebody else who also you have a great voice, whose music we've always, songs we've always hummed, and आप जब भी स्क्रीन पर आती है, you steal the show, आप 4 चांद लगा देती हैं, और आर्या की दुनिया में इस सीजन में आप नई एंट्रेंट हैं, और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा आपको देखते हुए बैठ के रेशम का रुमाल गलत है but मैं कहूँ ट्रेलर से लग रहा है कि आप कड़ी टक्कर देने रानी माँ के रूप में आर्या को तैयार हैं. तो रानी माँ के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं, क्या तहलका मचाने वाली हैं आप आर्या की दुनिया में? मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है. शेरनी को उसकी मांग में जाकर के मारना बड़ा मुश्किल है, और ये जिम्मेदारी राम ने मुझे सौंपी, और राजस्थान में सब कुछ हुआ तो जाहिर है कि जिस अंदाज में मुझे काम करने को कहा गया मेरे डायरेक्टर्स ने, अमित ने, श्रद्धा ने, स्पेशली राम, तो ये अगर माँ है, ये बार बार कह रही है माँ है, मैं भी माँ हूँ. इनका एक पास्ट है तो मेरा भी एक पास्ट है. इन्हें अगर राज करना है तो मैं भी राजपाट छोड़ना नहीं चाहती,
ये दो औरतों की लड़ाई है, इसे आपको वही देखना पड़ेगा। War begins with the 3rd of November. Well, Kushi, I'm wishing you the best for season 3 of Arya and welcome to the universe of Arya. सिकंदर रानी माँ को टक्कर देने तैयार है, पर हमने सीजन 1 से देखा है कि आपने हमेशा रक्षण किया है फैमिली का, आर्या का. You've been the biggest confidant for Arya. How are you going to be a part of making her empire bigger this time and also fight her rivals? Because as Rani Ma said, टक्कर देने तैयार है. Punjab. Okay. I mean, he's always there, he's always around her. शायद कभी कभी उसे छोड़ना चाहता है, पर जा नहीं पाता है. हाँ. I think he's just there in the shadows here. To be very, very honest. I think just to be very, very honest, it's just beautiful. More than talking about Daulat or anything, just for me the most important thing is that हम थर्ड सीजन में हैं एंड लिटरली फैमिली बन चुके हैं. सारे को स्टार सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे के सारे बैठे हुए हैं. अमिता है वहाँ पे, राम का मैसेज है. मैं यही कहूँगा कि आर्यमन के साथ काम करने में बहुत मजा आता है. सुश की आंखों में आंखें डाल के देखने में बहुत मजा आता है. हाँ जी, इस काम के पैसे मिलते हैं. आप बढ़ा दीजिएगा, छोड़ियो. I think it's just beautiful to be a part, with Hotstar, with Ira ma'am this time who's known me for so many years, Vikas, all of you all, and Kapil and Shraddha, with their known for so many years. Yeah, Shraddha was with us in the first season, and just a big thank you to just be a part of the show. And I'm sure that Daulat will always be lurking in the corners, looking for pillars and seeing as less as possible. इस बार कुछ और डायलॉग दे दिए थे मुझे, ना स्ट्रेस में घूम रहा था यार बोला. तो जितना कम बोलो उतना बेटर है. But Sikandar, I have to compliment you. This is silence says 1,000 words and emotions as well in your case. So, commendable for that, the way you look and you speak through your eyes in the entire season. So thank you so much. Thank you. ACP खान, विकास कुमार, आप तो मैंने कहा जैसे हाथ धो के पीछे पड़े हैं आर्या के पीछे. क्या इस चोर पुलिस के सिलसिले को कोई अंत मिलेगा इस बार? And we've seen action काफी सारी. You're chasing Arya this time. Do we see any action scenes or what do we expect in season 2? बहुत कुछ देखने को मिलेगा. ये सीजन 3 है और सब कुछ 3 गुना है, इसलिए 3 नवंबर को भी आ रहे हैं. सीजन 2 में थोड़ा सा खान had taken a back seat, थोड़ा सा. He was more preoccupied than occupied with his occupation. लेकिन जहाँ खत्म हुआ था कि मैं कहता हूँ इनसे कि सुनाए आप डॉन बन गई हैं, where she मारोज एन आर्या on and says I'm just a working mother. पर अब ये बन गई है डॉन और अब मैं नहा धो के कमर कस के मोजे ऊपर करके खींच के पीछे पड़ गया full on. तो triple the thrill, triple the maza, triple the action, and with thrice as much passion ACP Khan is after that. Specifically, we would want to ask you, are there any action sequences between you and Sushmita? है ना, क्यों नहीं? अब वो एक्शन किस तरह का एक्शन है वो तो देख के पता चलेगा, पर है. Strictly because We have less action, more reactions. हमारी आंखों में और डायलॉग्स में बहुत कुछ होता है. वो तो हाँ, we look forward to scenes with each other and वो क्योंकि इतना वो कॉन्फ्रंटेशन जो है उसमें जो एक टेंशन होता है उसमें मजा आता है. and it's going to be triply amplified on the 3rd of November. Yes. Yeah. Wishing you the best. मैंने अभी तक ट्रेलर देखा नहीं था, मैंने अभी देखा. मैं बता रहा हूँ, मैं उछल रहा हूँ. I want to see it again. 2 बार देखा, 3 बार तो बनता है. But yeah, We must see it one more time later. We will, definitely. आपका हुकुम सर आपको. Thank you, and with that, friends from the media are waiting to ask questions, and before you ask a question, as in tradition, may the classic, please identify yourself, identify the publication that you belong to, और फिर सवाल किससे पूछना चाहते हैं, इससे आसान से हम we can direct the question, and our volunteers and team members will help you with the mic. To the left here, there's already a mic there at the back. If you don't mind, sorry. Hi, Gaurav. I'm
Akshay from IMS News. My question is that we have seen with Sarko and Flamingo and I'm sorry, love the mic a little closer, thank you. is it better now? Yeah. Yeah. I was saying that with Sasbahu and Flamingo and now with Arya, as Ila ma'am said, that it's going to be a war between two women. Uh, do you think that going forward the landscape of content will be for the good dominated by women and the stories? It has always been dominated by women and their stories as far as my network is concerned. I think the first show that put Star on the map was a show called Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. And we have always been, I feel sometimes, rather harshly criticized for focusing on issues in the kitchen or issues between mothers-in-law and daughters-in-law. But well, they were real issues. And they were also issues that were being not addressed by mainstream films, and we wanted to sort of change that and challenge that. And I think the real power has also come by strengthening the voice of women behind the camera, the point that Sushmita was mentioning. I think one of the big highlights of this series is the amazing strength of women behind the camera who make the women on screen so powerful. And whether it's Amita, whether it's our DOPs, and in the case of storytelling at Star, amazing showrunners like Ekta Kapoor, like Shashi Mittal, so many people who've contributed so incredibly powerfully to a narrative where we're talking about issues which are centrally important to women and which must get done. And thank you for noticing Saas Bahu or Flamingo. It's a show that I'm incredibly proud of. And also because we had Dimple Kapadia in the lead, right? And that was so impressive, so powerful, and good to see that. Just before that, we had another show called Out of Love, right, which had Rasika Duggal, and that was an incredibly good show as well. So yes, I think it's a incredible tradition. We're very proud of it. We want to do more of it, and there's nothing quite like Arya. So really looking forward to it. Thank you. Hi Sushmita, Rashida here from Bollywood Public. Firstly, an incredible trailer. I'm sure it's going to be bigger and better. My question to you is, we have seen Arya have this roller coaster like journey. Like now when we see her in this trailer, she's roaring and how she's deadlier than ever. But you personally, what do you feel? How is she different in the third season? Because we have been seeing her in the past two seasons so closely. We sort of also expect something new from her because we know if it's Arya, it's not going to be basic. So yeah. Lovely question, and thank you so much for appreciating the trailer. Honestly, I just want to digress a little. हमने जब आज पहली बार बड़े स्क्रीन पे सबके साथ देखा ना, I felt this immense sense of pride because इतने लोगों ने मेहनत की है इसे बनाने में, and to take the story forward in a way where you should expect the unexpected. It is exactly what this trailer promises. The thing about Arya is, उनकी जिंदगी में इतना कुछ हो गया है कि सीजन 1 से सीजन 2 तक वो बटोरने की कोशिश कर रही थी, things that she could save. Now in season 3, she has nothing more to lose, and that's the most dangerous woman, when she has nothing more to save or to lose. I don't want to give you too much, but season 2 में सब ये शिकायत करते रह गए कि डॉन क्यों नहीं बनी है, डॉन की तरह एक्ट क्यों नहीं किया. Well, this is that season where you finally have a woman who is unapologetic about the seat she sits on, and I find her to be very, very dangerous this season. So look out for it, love. Lovely. We are looking forward to watching her. Thank you so much. Thank you, Janvi. Thank you. Please raise your hands, please. Hi, Neetu Singh, दैनिक भास्कर से. Hi मैम. Hi. नीतू सिंह, दैनिक भास्कर से. ट्रेलर बहुत अच्छा है, सुपर पावरफुल है. लेडीज के लिए मैं खुद प्राउड फील कर रही हूँ एज अ फीमेल, सो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. हीना मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि हमेशा से आपने एक ब्रेव
एक पावरफुल किरदार हमेशा से आप निभाते रहे हैं। स्क्रीन पे तो हम देख रहे हैं दो शेरनियां भिड़ रही हैं आपस में। सेट पर आप दोनों की केमिस्ट्री किस तरह से रही है, आपकी और सुष्मिता की? ये माँ है। You tell her. We've not our first outing actually. हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। हमारा रिश्ता बहुत लंबा, बहुत पुराना है। और जब मुझे राम ने कहा कि आप आर्या में आ रही, तो मुझे आर्या नहीं सुष्मिता की दिखी, क्योंकि जितना समय मैं इनके साथ बिता लूँ उतना अच्छा है। ये बहुत प्यारी है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और जिंदगी के जितने भी मसले हैं, जितने भी खूबसूरत लम्हे हैं या कुछ ऐसे लम्हे जो हम शेयर नहीं कर पाते, उस सब हमने किए, बहुत अच्छा समय गुजारा। तो मैं यही कहूँगी मुझे जी जान से प्यार है। थैंक यू सो मच मैम। आपसे पूछना है सुष्मिता जी, आर्या 1, आर्या 2 दोनों सीजन हमने देखे हैं जी। ये अब तक आर्या फैमिली से, परिवार से एक आपसी लड़ाई थी, बट अब आर्या पहुंच चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, रशियन से लड़ रही है, प्लस पुलिस पीछे पड़ी है, एक शेरनी जाग चुकी है। इस बार शिकार करेगी या शिकार होगी, थोड़ा सा कुछ बता पाए आप तो? ट्रेलर देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि शिकार होगी, है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हार जीत लगी रहती है, and that is the excitement of life, and it is also the excitement of Arya. कि यहाँ पर कोई एक ऐसा हीरो किरदार नहीं है जो हमेशा जीतता है। जब हम हारते हैं तो it's so close to life that you can lose everything in one moment. This has been a very, कहते हैं कि कुछ किरदारों को, कुछ सीक्वेंसेस को, कुछ सीरीज को या फिल्मों को आप just because you're a good actor you can play that part. Arya is not like that. हमारा जो शूटिंग का तरीका है, जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, उसमें आपको सच्चाई जीनी पड़ती है उस मोमेंट के लिए, जो कि इस सीजन में आपको भरपूर दिखेगी। एंड वो हर बार हारेगी भी नहीं, उसकी जीत का भी अलग मजा है। बट नो, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स जो आपने कहा कि ये पहले 2 सीजन्स काफी पारिवारिक थे, जहाँ पर इट वॉज अबाउट फैमिली, इट वॉज अबाउट चिल्ड्रन, इट स्टिल इज, वो माँ भी है। लेकिन वो समझ गई है कि अगर शेर की सवारी छोड़ दोगे तो शेर खा जाएगा, तो उसने सवारी करना मंजूर कर लिया है। Thank you for your question. Yes. Hi, this is Uday here from Musex. Firstly, congratulations to all of you. I think it's truly made the journey for us from Delhi to Mumbai worth it. Just seeing this, first from the nation, very beautiful and very gripping. Sikandar, मेरा सवाल आपसे है. Daulat, of course, knows the dark secrets of the Sareen family and has carried out their risky deeds. We've seen that in the last couple of seasons. मगर अब मेरा सवाल ये है कि आगे क्या दौलत रिटायर होने को तैयार है? What does the future hold? Can you tell us a little bit? How are you? How's your flight? Good, comfortable. Great, that's good. ये रिटायर करने की कोशिश आई थिंक इसके जहन में नहीं आती यार। जब तक आर्या है तब तक दौलत रहेगा। आई थिंक बेचारा, आई फील फॉर दौलत ऑनेस्टली एज सिकंदर। मैं तो उसको बोलना चाहता हूँ यार, चल ना भाई निकल, तो दौलत जाता ही नहीं है। आई थिंक उसका जो कनेक्शन है, कभी कभी किसी से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है ना लाइफ में कि उसका you don't understand where that love comes from. You don't even know why you love that person. They might not even love you back. You might think that they'll never ever be, it'll never happen. But देते रहेगा वो प्यार, बस निकलते रहता है। I think जैसे जानवर देते हैं ना, to be honest, in the most loveliest way, because animals are my favorite things in the world. जैसे जानवर किसी को प्यार देता है, आई थिंक वैसे दौलत का प्यार है आर्या के लिए। बट he wants so much more, but he knows what it is. तो आई थिंक रिटायर तो नहीं करेगा। आई थिंक आर्या शायद रिटायर हो जाएगी, पर दौलत कहीं नहीं जा रहा था। Hello everyone, it's Mom.
आपको लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्री में हमारे मेकर्स हैं, ये जो अदाकारा है आपके भीतर, वो पोटेंशियल को पहचानने में थोड़ा वक्त लगा दिया? पहला जो जैकेट था उसमें आपको खूबसूरती में खो के रह गए? बहुत ही गहरा सवाल है। ये शिकायत करनी चाहिए हमें किसी से। अभी आई हैव नॉट फिगर आउट किससे करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। देखिए, मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग लाइफ में ये है कि जहाँ हम इस बारे में सोच सकते हैं कि शायद इन्होंने या उन्होंने या पूरी इंडस्ट्री ने मुझे वो मौका नहीं दिया या वो मेरे पोटेंशियल को पहचान नहीं पाए, बहुत छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि मुझे 2024 में 30 साल हो जाएंगे, 30 years in this. मैं 18 साल की थी जब मुझे ऐसे स्टेज पे खड़ा कर दिया था, और मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी मेरे लोगों से, मेरे देश से, मेरी पहचान से। उससे 30 साल बाद मैंने ज़िंदगी में जो भी किया है, मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया है। कितनी बड़ी बात है कि उस इंडस्ट्री में मैं जहाँ पर प्राइम टाइम पे 8 साल काम छोड़ के चली गई, उसी इंडस्ट्री ने मुझे दोबारा इतने प्यार से वेलकम किया। क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस कमाल है, और जब तक वो मुझे देखना चाहते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेल बिहेव्ड है ना सब? We must have, please ask the question. इन्होंने 3 बार ना ऐसे किया, क्लास में जैसे रहता था ना सवाल पूछने में ऐसे। Yeah, do sure. Sushmita, I have to say this and be honest that many a times when you start speaking, we all just get carried away. We just keep looking at you. You just keep listening to her and keep looking at you. So you forget to ask a question, should we speak or not? So, yeah, it's a fact. Thank you. Yeah, the question is Sushmita Sen. First of all, I would like to compliment you out of the box, if he permits me to. Please. Ma'am, you are fabulous in Taj. Amazing. Good thing. Thank you. My question is, like, you've been in the first day, you worked with all the superstars. जी. You made a mark in that also. Now the second day, जी. now with all sort of role, mother's role, and whatever role you have done it, now become a don. Yeah. तो और क्या दिखाना था उसके बावजूद? कुछ रह गया? ये बहुत लंबी लिस्ट है। क्या कह रहे हैं आप? ये तो अभी तो शुरुआत, उसी सेकेंड इनिंग्स जैसी शुरुआत हुई। आपका नाम क्या है? विजय. विजय deserves to ask this question. क्योंकि क्या है, जब ये सेकेंड इनिंग शुरू हुई 2020 में, I became a newcomer. बहुत लंबी लिस्ट है। I have to do a mature love story. I want to do a kick-ass action film, जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो ऐसा। I wanted to play the worst, most dangerous antagonist you've ever seen, villain. All that is in Arya's So ये सब है, बहुत लंबी लिस्ट है, ये शुरुआत है, लेकिन मुझे इस साल तो बहुत ही बढ़िया काम करने को मिले, और I am very grateful. And I continue, and I hope that this continues and allows me more work like that. But yeah, लंबी लिस्ट है मुझे, बहुत लंबी लिस्ट। Thank you, Vijay, for your question. क्या ताली बजाओ या मत बजाओ क्या? Anyone else, guys? Yes, on the left. Hi, Sushmita. Oh, hi! Hi. Your friend is here, Renee. Hi. Hi. Sushmita, will it be safe to say after season 1 and 2, we are in Aryaverse? This is, as we say, a universe. We have an Aryaverse where we are celebrating not just a strong woman, but every shade of woman, which fortunately or not in OTT space, I would say this is, I think, the first time somebody is getting 3 consecutive seasons with a bang on lead. How do you see that? I think that what we got absolutely right, the entire team and Hotstar and all of us, was season 1. Then the verse began. The Arya verse began. Once it began, it belonged.
So 2, set that into motion further, and 3, and thank God for the third season, because this is our most favorite season. There's a lot happening in it, guys. So please do not get up from in front of the TV or phone or whatever you're watching it on to take a break. You'll miss something. It's that fast paced and it's a very exciting season. So, yeah, we are already in Arya's verse since season 1. And thank God for that. I'm very well, thank you. What's your name? आपका नाम? रूना। रूना, hi. देखिए आपको देख के मैं सवाल भी भूल जाती हूँ। आर्या की जरिए ना आपने जैसे कहा ना कि अंदर की राक्षसी भी जाग जाती है, शायद ऐसा एक आपका लाइन में था। आपके एक कभी कभी हाँ जी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए एक माँ को भी राक्षस बनना पड़ता है। I totally agree because I'm a mother. हालांकि वो मौका भगवान ने ना कर ऐसे किसी को करे। आपके इतने सशक्त रोल को देखकर आपके बच्चे क्या कहते हैं? क्या उन्होंने इतने प्रोटेक्टिव होते हुए कभी आपको अपनी जिंदगी में उन्होंने देखा है? I think आर्या में सच्चाई इसलिए झलकती भी है क्योंकि हम सभी कैरेक्टर्स को ये बताया गया है कि खान साहब में विकास होने चाहिए, दौलत में सिकंदर होने चाहिए, आर्या में सुष्मिता होनी चाहिए, और रानी माँ तो है ही नीला जी, like the grand, she's literally done this at home because it's Rajasthan and she's like, so all of us अगर हम आप तक पहुंच रहे हैं वो इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि हम अपनी सच्चाई भूलते नहीं हैं, साथ लेके आते हैं। तो द प्रोटेक्टिवनेस ऑफ आर्या वो मेरे बच्चों ने सुष्मिता में बहुत देखा है, बहुत ज़्यादा। एक तो माँ हूँ और 2 बेटियों की माँ हूँ, तो जिंदगी में कभी उनको अकेले नहीं छोड़ा मैंने जब तक वो they didn't get to an age where I could leave them alone. So it's been a very daunting task. But yeah, I also 2 चीज़ें मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, आर्या भी करती है ये। मेरे बच्चे दूसरे आर्या के बच्चे वहाँ पे बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, हाय जान मेरी, हेलो। सो दे टेल यू, एक होता है आप अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, दूसरा होता है आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। ये दोनों चीजें एक्चुअली मेरी लाइफ में और आर्या की लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। थैंक यू जान। Thank you. Yes, you may speak. On to the left, there's a mic there. Thank you. मेरा सवाल विकास सर से है। हमने आपको सीआईडी से पुलिस की किरदार प्ले करते हुए देखा है और आर्या में भी आप पुलिस के किरदार, तो व्हाट इज द डिफरेंस, आपके मुताबिक डिफरेंस क्या है और आपको आपने कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा एंजॉय किया है? मैंने जो कुछ भी किया है एंजॉय किया ही है और पूरी शिद्दत से किया है। सीआईडी बहुत पॉपुलर शो है और वो लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजरल कॉप शो है। यहाँ पर तो बहुत मल्टीपल लेयर्स हैं, बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, इमोशंस हैं, इक्वेशंस हैं जो चेंज होती रहती हैं। सीआईडी मैंने बहुत एंजॉय किया है लेकिन वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक सर्टन ऑडियंस को टारगेटेड है, हर एपिसोड में एक नया केस है और सीधे सीधे है। यहाँ तो आई मीन ऑफ कोर्स दिस इज मच मोर डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू इनैक्ट एंड बहुत मज़ा आ रहा है और इतने खूबसूरत को एक्टर्स हैं साथ में, तो इनके साथ एक भी सीन नहीं है मेरा अभी तक। शायद सीजन 1 में एक था, गिरफ्तार करके किया था मैंने। हाँ नहीं, आई मीन आई एम लविंग इट हियर एंड ऑफ कोर्स इट्स अ चैलेंजिंग पार्ट एंड आई होप आई एम डूइंग वेल। You are indeed. Thank you, Vikas. Yes, on to the left itself. We still have. Yes, please. Hi, this is Priyanka from the Telegraph newspaper in Canada. Congratulations for such a great trailer. Really looking forward to watching this season. Gaurav, my question is for you. That in the era of so much content that's going around, what do you think it is about
Arya that makes it such a clutter breaker to be able to sustain across 3 seasons, and besides Sushmita and besides the Emmy nomination? Perfect. He's going to answer this question in Bengali. Jyoti to Dakshune kyo na ashe. I think that is the answer, right? And I think in many ways that is the core because we have, and I think the team as a whole has wanted to break with tradition at every time and chosen to do it the hard way. So, since you didn't allow me to mention Sushmita, I must take one name, Ram Madhwani, right? So, I think Arya is a tribute to the creative genius of Ram Madhwani. And I think and I'm going to call him right after this and give him grief for not being here. But what he has done through this storytelling is really tell us something about the human existence and the way we are supposed to feel about family, feel about bonds, feel about emotions. And I think that's been a major part of this journey from the first day. And I think I have to say something to salute the resilience of this team. Because every season of Arya has thrown such incredible human challenges their way. It has been stunning to see them sort of recoup from that and come back. You know, we were just talking about it. The first season, they finished the shoot and the pandemic happened. And the entire post production of it was done when we did not know what was happening in the world, right? And so, how do you post produce such a big show? And today we are in season 3, so a lot of this seems certain, but it wasn't so certain, right? This was one of the first really big series being made in India. We didn't know how to really, the rules had not been set. So the team went and dealt with that. The second season was shot during the COVID wave. The third season has been about the shipping and her comeback and how amazing that has been. So I think the challenges that this team has been through, the resilience and strength that they have shown, it just shines through the screen. You can't miss it. And my salutations to that. So I just believe that for the storytelling values and the human emotions that are conveyed, and for the grit and determination that is shown, nothing compares to Arya. Well, thank you so much. And with that's all the time we have for the Q&A. And this calls for us for a nice photo. Before that, I'm going to say we're looking forward to this whole OTT verse that we see. Arya has stood out from season 1